our next category, that of youth. 3 real heroes being awarded this evening in the category. All 3 women, more than 33% reservation here. But of course, their struggles are going to show that they've taken every battle head on. Presenting you the real heroes in the youth category. The real heroes for the category youth are Vijay Lakshmi Sharma, a child bride who refused to marry, who questioned tradition, who changed the fate of girls in her village. Vijay Lakshmi has raised her voice against child marriages to insist on education, empowering the girls in Rajasthan. Ishita Khanna, a warrior against climate change. Ishita Khanna is creating a green economy in the Spiti Valley, getting the locals to harvest sea buckthorn. So its properties of holding the soil, it's very good for preventing soil erosion, which are some of the consequences of climate change. And showing them the uses of solar energy. Ishita is a green hero. Naseema Khatun. मतलब अगर इस रेड लाइट एरिया का मुद्दा है तो ये लड़ाई भी रेड लाइट एरिया की बेटी, यहाँ की धंधे वाली औरतें, नाचने वाली औरतें, इनकी ही होनी चाहिए. Born to a sex worker, Naseema is fighting for the rights of prostitutes, saving their children from the flesh trade, giving them a chance at education, giving them a chance to speak out, fighting to shake off the stigma attached to prostitution. Let me now call on our first real hero in the youth category, Vijay Lakshmi Sharma. Can we have you on stage, please? You heard she is a child bride who refused to marry. She took on her family and relatives. Not just that, she studied further and today counsels and dissuades many parents of other minor girls in the village. नमस्कार, आप सब लोगों के बीच में आके आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली और एक गरीब परिवार में पली बड़ी हूँ. कभी कभी जिसे 2 रोज की रोटी भी नसीब नहीं होती है, वो आज इस जगह खड़ी है. मैं जब 14 साल की थी तब मेरी शादी होने वाली थी और मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, अपना नाम रोशन करूँ. जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी मैं शादी नहीं करना चाहती, भी पढ़ना चाहती हूँ. तब मम्मी ने डांट के कहा कि नहीं, शादी करनी ही पड़ेगी. मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, भी शादी नहीं करना चाहती. तब पापा ने कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है जो तेरे को पढ़ाऊँ मैं. ऐसा लगा कि घर वाले मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे. तब मैंने अपने घर वालों का विरोध किया और शादी के लिए मना किया. उस दिन से मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं किसी भी लड़की की बाल विवाह नहीं होने दूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े. पर ताकत है इतनी? हाँ है ताकत, तभी तो आज से खड़े हैं. चलो. Can we tell you these are all feisty, strong-willed women? Well, let me call on our next real hero in this category, Ishita Khanna. Can we have you on stage, please? She's taken up the cause of climate change, something that affects us all. Ishita is helping residents of Spiti combat climate change. Her aim is to help locals build a green economy. Spiti is a long way away. It's a really long way away, and I really thank CNN for coming all the way there. It was in the middle of a snowstorm, and really courageous of your team to come up there and fight the snowstorm. I'm a bit nervous out here standing in front of Amir Khan. But anyway, You want a message for him? You know, in 3 Idiots, he played Phunsukh Wangdu. You're a real-life Phunsukh Wangdu. That's what you should tell him. Far from it. But yeah, I really admire Amir Khan and the movies that he does. I think they really have a good social message, and please carry on doing those kind of movies. I'm really humbled with getting this real hero nomination, and I mean it really belongs to my entire team and not just me, because we're all of us working there. I work in the environment, so my biggest inspiration really is nature, and you know how it just gives us everything selflessly, and we just take everything selfishly from it and never give anything back. So my real message is like, you know, that give back something to the Mother Earth, you know, because she really nurtures us. Thank you.
Thank you very much, Ishita. Let me now call on stage our next real hero, Naseema Khatoon. She's a daughter of a sex worker. She's fighting to change lives of those in this profession. Naseema, can we have you on stage, please? Parsham, her organization, works with sex workers and also helps with education of their children. मैं जहाँ जन्म ली वो एक रेड लाइट एरिया मतलब देह व्यापार की एक मंडी है और मेरी ये जितनी भी लड़ाई की मुहिम की जो भी आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ इसके पीछे उन औरतों की वो आवाज है जिनको मैं नहीं सुन पाई, समाज सुन रहा था और शायद उन लोगों की भी जिन्होंने इसको बार बार बस के उजड़ने की नौबत पे बना दी। मेरे लिए ये मंच बहुत अहमियत रखता है, इसके लिए आप लोगों को सलाम, हमारे पूरे लोगों के तरफ से आपको सलाम कि एक नया इतिहास मेरे लाइफ में और मेरे पूरे इलाके के लोगों के लिए आपने रचा है कि वाकई में मैं ये बोलती थी कि रेड लाइट एरिया की बेटी हूँ और सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है, जो पढ़ना है पढ़े, मैं तो आगे बढ़ गई हूँ। क्योंकि ये बोलना मेरे लिए एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण था जिसकी इजाजत समाज ने नहीं दिया और आज मैं ये गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं रेड लाइट एरिया की बेटी हूँ। थैंक यू। आपने वाकई हिम्मत बहुत है। कुछ तो मेरी हिम्मत बस वैसे लोगों के कारण बनी जिन्होंने मुझे बार बार पीछे खींचने की कोशिश करी। मैं बोलती हूँ लोगों को कि मैं जब रोती हूँ तो उसके बाद 2 गुना मैं मजबूत हो जाती हूँ, शायद ये मेरी हिम्मत है। नसीमा खातून, बहुत बहुत शुक्रिया। Give her a big hand, ladies and gentlemen. हम सबको आप पर बहुत गर्व है। I know, Sachin, you support various charities yourself. People often don't know the work that you do outside. Does that give you as much fulfillment as maybe scoring a century sometimes? I have been associated with the Make-A-Wish Foundation, and my wife, being a doctor, we visit cancer patients and also call them home, and we make it a point to have our children around, both Sara and Arjun, to spend time with them and just to appreciate how lucky they are in life. And again, as I said, not to complain. There are two parts in life. One is, if you complain all the time, you'd never be happy. But you appreciate all the time what you've got, you'd always be happy in life. From personal point of view, I feel it is extremely important that if I am in this fortunate position, just to lay a platform for them where it gives them equal opportunity like anyone else. And that is what we try to do. I mean, whatever money we've raised for the charity, today I can proudly say that, you know, there are many children who've benefited, and this will not stop. We'll continue to raise money for them. Thank you very much, Sachin, for coming. Thank you. I'd like to call on Sanjay Dua, the CEO of Network 18 Media and the head of IBN 18 Media Operations, to please come up on stage and give a memento of our thanks and appreciation to Sachin. मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे सचिन तेंदुलकर जी एवं अंबानी ग्रुप के परिवार को एवं मेरा आमिर खान जी, इसका मतलब है ई सिंगमुम में आमिर खान को जाना पड़ेगा और वहाँ सिनेमा थिएटर लेनी पड़ेगी। इन्होंने गजनी देखी ना, तो मेमोरी लॉस हो जाता है।